In this lecture, we are going to talk about the cultivation of viruses. As you know that we can grow, you have learned in your previous chapter about bacteria, how they are cultivated, how we can grow them in the lab. For viruses, it's a bit different in a way that you know that viruses are at the borderline of living things and non-living things. So they can be grown in vivo, that is within a whole living organism, plant or animal, or in vitro, which means that outside the living organism, but in live cells, in an artificial environment, like a test tube, cell culture flask, or agar plate. So, if we talk about bacteriophages can be grown in the presence of a dense layer of bacteria, which is known as bacterial lawn, the one you have done in your labs, thick lawn, or when you take a swab from a test tube and then put that culture onto the agar plate in a petri dish, that's known as lawn. So a dense layer of bacteria. So bacteriophages can be grown on that bacterial lawn, but the only difference is that in the agar concentration in bacterial culturing is a bit higher in concentration as compared to viruses. If we talk about viruses, then we have to reduce the concentration of agar, that is about 0.7% of soft agar. That agar is not very solidified, as you have seen in your labs while bacterial culturing. So the agar concentration is decreased from 1.5% to 0.7% only, that is a soft agar. And the meaning or the purpose of this soft agar is to make bacteriophages easily diffuse through the medium. So if we are talking about latex bacteriophages that are going to lyse the bacterial cell, then it we can observe it, the lysis, we can easily observe it with the help of a clear zone which is known as plaque. You can see it here. So these are the culture flasks. These are the flasks in which you can grow viruses. These are the horizontal players, a bit different from what we have seen in bacterial culturing. And this is these smaller zones, like this one and this one, these are known as plaque. So it is being thought that one this one clear zone means that one bacteriophage has lysed the bacterial cell and so on. So these are in different concentrations. We dilute the viral suspension and then we pour them into different petri dishes and to observe clear zones of plaque like this one. These are the dense plaques. Then this may be a bit diluted, and this one very diluted. So you can observe the phage when it kills the bacteria among these plaques by counting these plaques. So if we talk about animal viruses, we were talking about bacteriophages or bacterial viruses. If we talk about animal viruses, they require cells within a host, animal or tissue culture cells, which are derived from an animal. Animal virus cultivation is important for different purposes, out of which the most important are we can identify and diagnose pathogenic viruses in clinical specimens. We can produce vaccines with this. We can do basic research studies. So in vivo host sources can be a developing embryo in an embryonated bird's egg like chicken or turkey, or in a whole animal. Before tissue culture technology was established, in 1950s, embryonated eggs had been used for cultivation of some viruses such as influenza virus during the 1930s to 1950s, and even today embryonated eggs are utilized for the propagation of
influenza virus, in particular for vaccine production. The embryo or host animal serves as an incubator for viral replication. Um, you can see it from here like this. These are the chick embryo, and these are being used as a host cell. So, uh, a chick embryo, which is about 10 to 14 days older after fertilization, it can constitute diversely differentiated tissues, which includes what, like this amniotic cavity, chorioallantoic membrane, you can see it from here, amniotic cavity, then this embryo, albumin, yolk sac, shell. These are the different tissues which are developed after 10 to 14 days. So we can take those chick embryos um, that has been 10 to 14 days older after fertilization. So many viruses have a tissue tropism. That means they grow in a specific area or in a specific tissue, and they must be therefore introduced in a specific site for growth. For example, if some of the viruses can grow in this yolk sac, then we have to insert the viruses here for their cultivation, and then we can withdraw after cultivation we can withdraw the fluid from this yolk sac to observe it under microscope or and different detection methods. So location within the embryo or host animal is important. Within an embryo, target sites include the viral infection may within an embryo target sites which includes the viral infection, it can damage tissue membranes, produce lesions called poxes, disrupt embryonic development, or cause the death of the embryo. All the embryonated eggs have been largely replaced by tissue culture these days, but it is still used in a laboratory to obtain high viral titer for some viruses, such as influenza virus and Sendai viruses. And for basic sciences or for um, uh, students like you people, undergraduate students, this embryonated egg is a good um, host for culturing or for cultivating viruses. So the things we were talking, आपको जो बात मैं बताना चाह रही थी, दैट वाज कि हम कल्टीवेशन यानी वायरसेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. तो ये दो मेथड्स हैं, यानी इन विवो भी आप कर सकते हैं विद इन द होल ऑर्गेनिज्म, या उसके किसी टिश्यू के साथ, टिश्यू या कोई सेल एक्सट्रैक्ट आउट किया वो बॉडी से एनिमल की, और उसके अंदर भी आप वायरसेस को ग्रो कर सकते हैं, और इन विट्रो भी कर सकते हैं टिश्यूज़ अलहदा से करके या आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वैसे आपको पता है कि वायरसेस रिक्वायर होस्ट टू रिप्लिकेट, तो इसीलिए या तो हम पूरे एनिमल के अंदर इसको चेक कर सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म में या किसी प्लांट या एनिमल के अंदर, और या फिर हम उसको आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना दें, जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू ले लें हम या सेल ले लें और उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करके, और उसके बाद उसमें वायरस जो है वो ग्रो कर सकते हैं. अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो ये आप बैक्टीरियल लॉन बना सकते हैं. जैसे आप पेट्री डिश में बैक्टीरिया की लॉन लगाते हैं अपनी लैब्स में, इसी तरह आप ऐसे ही बैक्टीरियल लॉन लगाएंगे, और उसके बाद आप उसमें अपना वायरस जो है उसका टाइटर बना के वायरस का कॉन्सेंट्रेशन जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो बना के आप उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं. इसमें यूजुअली जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जब आप बैक्टीरियल कल्चरिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सॉलिडिफाइड एगर आप यूज़ करते हैं, तकरीबन 1.5% कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो. लेकिन जब हम वायरस ग्रो करना चाहें तो उसमें आपको थोड़ा सा सॉफ्ट एगर यूज़ करना पड़ता है, अबाउट 0.7%, ताकि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाएं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर. उसके बाद इनकी जो लिटिक बैक्टीरिया होते हैं इनकी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. ये जगह ये जो है ये कल्चरिंग ऑफ वायरसेस के लिए हम इस तरह की फ्लास्क यूज़ करते हैं जिसमें सेल कल्चर्स यूज़ करते हैं. और अगर आप इसको पेट्री डिश में इस तरह से ऑब्ज़र्व करना चाहें तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, दीज आर नोन एज प्लाक्स. ये प्लाक उस वक्त बनता है जब
वायरस जो है वो सेल को लाइस कर देता है, बैक्टीरियल सेल को लाइस कर देता है, और इतना लाइस कर देता है कि एक क्लियर जोन आपको नज़र आती है प्लाग की सूरत में, और इसको आप फिर प्लाग को काउंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आप बैक्टीरिया के लिए देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप प्लाग फॉर्मिंग यूनिट जो है वायरस के लिए देख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद एनिमल वायरसेस की जब बात की जाती है तो उनको हम लिविंग टिश्यू में या होस्ट एनिमल में आप ग्रो कर सकते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि इसमें आपको जो भी कोई भी पैथोजेनिक वायरस है किसी भी क्लिनिकल स्पेसिमेन में, फॉर एग्जांपल ब्लड वगैरह में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं बाय ग्रोइंग इन द होस्ट सेल। और इसके अलावा आप वैक्सीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो बेसिक रिसर्च के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है वो भी आप इन मॉडल्स के थ्रू कर सकते हैं। होस्ट सोर्सेज में आप डेवलपिंग एम्ब्रियो ले सकते हैं, जैसे बर्ड्स एग है, कोई चिकन हो गई या टर्की का आप होल एग ले लेते हैं। और जब ये टिश्यू कल्चर वाली टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तो उससे पहले एम्ब्रियोनेटेड एग्स पे ही एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और वायरसेस को उनमें ग्रो किया जाता था। दिस इज़ अबाउट 1930s टू 1950s के दरमियान की बात है। तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं ये फॉर स्पेशली आज तक भी इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रोपगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें आप चिक एग ले लेते हैं जो फर्टिलाइजेशन के 10 टू 14 डेज़ ओल्डर होता है। 10 टू 14 डेज़ ओल्डर का मकसद ये होता है कि इसमें आपके पास डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ बन जाते हैं, जैसे एमनियोटिक कैविटी है आपकी, योग सैक है, एल्ब्यूमिन और एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो टिश्यूज़ डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो और वायरसेस की जो है ट्रोपिज्म होता है, यानी ख़ास टिश्यूज़ में या ख़ास जगहों पे ये ग्रो करते हैं, इनकी एफिनिटी होती है ख़ास टिश्यूज़ या सेल्स के लिए। तो उसी हिसाब से आपको वायरस का जो आप कॉन्सेंट्रेशन बनाएं, डाइल्यूशन बनाएं, वो आपको उसी जगह इंजेक्ट करनी होती है। फॉर सपोज़ योग सैक में कर दिया आपने, या आप एमनियोटिक कैविटी के अंदर कर दें, या फिर आप कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन के साथ कर दें, इस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन जो है लोकेशन इसलिए एम्ब्रियो के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब आप किसी भी ग्रोथ के लिए देख रहे होते हैं। तो एम्ब्रियो और होस्ट एनिमल की लोकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और इन्हीं टारगेट साइट्स में फिर आप देखते हैं कि क्या डैमेज आया है। आइदर कोई टिश्यू मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है, या लेजन्स जिनको हम पॉक्स कहते हैं, छोटे छोटे पॉक्स की सूरत में है, या कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोई रुकावट आई है या वो रुक गई है, या फिर डेथ हो गई है एम्ब्रियो की। इन्हीं सूरतों में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वायरस क्या डैमेज कर रहा है, कहाँ तक। अब नाउ डेज दिस एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है दे आर लार्जली रिप्लेस्ड बाय टिश्यू कल्चर। वो भी मैं भी आपको बताती हूँ टिश्यू कल्चर क्या है। और ज़्यादातर हम लेकिन फिर भी हम इन्फ्लुएंजा वायरस या सेंडाई वायरस के लिए चिक एम्ब्रियो जो है वो यूज़ किया जाता है स्टिल। इसके बाद इन विट्रो स्टडीज़ में हम डिफरेंट सेल्स को लेते हैं वायरसेस की ग्रोथ के लिए। इसमें हमारे पास दो तरीक़े होते हैं, एक प्राइमरी सेल कल्चर होता है और एक आपके पास कंटिन्यूस सेल लाइंस होती हैं। अब इसमें जैसे जो प्राइमरी सेल कल्चर इज़ freshly prepared from animal organ or tissue. Cells are extracted from tissues by mechanical scraping or mincing to release, or by an enzymatic method using trypsin or collagenase to break up tissues and then release single cells into suspensions. Because of anchorage dependence requirements of the primary cells, they require a liquid culture medium in a petri dish or tissue culture flask, जो अभी आपको लास्ट अभी दिखाया था हमने, tissue culture flask. This is known as tissue culture flask. So here the primary cells require a liquid culture medium in a petri dish or tissue culture flask. So cells have a solid surface such as glass or plastic for attachment and growth. Primary cultures usually have a limited lifespan. So when cells in a primary culture undergo mitosis,
and a sufficient density of cells is produced. Then cells come in contact with other cells. When this cell to cell contact occurs, mitosis is triggered to stop. This is known as contact inhibition, and it prevents the density of the cells from becoming too high. So, to prevent contact inhibition, cells from the primary cell culture then must be transferred into another vessel with fresh growth medium. This is known as secondary cell culture. Periodically, cell density must be reduced by pouring off some cells and adding fresh medium to provide space and nutrients to maintain cell growth. So, every time when you have to cultivate virus, then you have to go through this whole process, यानी फिर आप टिश्यू को स्क्रैप करेंगे, प्राइमरी सेल कल्चर बनाएंगे, एंड देन यू विल मेक सेकेंडरी सेल कल्चर, एंड देन यू हैव टू मेंटेन इट टू have live cells. In contrast to primary cell culture, continuous cell lines, these are derived from transformed cells or tumors. They are modified, genetically modified, so they often they are able to be subcultured many times, or even they can grow indefinitely. So they don't need a solid support. They are not anchorage dependent. So they can grow in suspension. So that's why they are known as immortal. So when they have lost their ability to contact inhibition, then these can grow in piles or lumps resembling small tumors and small tumor growths. Nowadays जो टेक्नोलॉजी अब हम यूज़ करते हैं, these are known as प्राइमरी सेल कल्चर और कंटिन्यूस सेल लाइंस. कंटिन्यूस सेल लाइंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं. प्राइमरी सेल कल्चर, ऑल्दो आपको अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से कि कुछ जगहों पे जहाँ पे आपको एग्जैक्ट एग्जिबिशन चाहिए होती है सेल्स की, तो वो आप प्राइमरी सेल कल्चर के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं. इसको इस तरह समझना आपके लिए आसान होगा कि जो एनिमल टिश्यू है उसको मैकेनिकली आप निकालते हैं उस जगह से, उसको स्क्रैप ऑफ करते हैं, उसको मिन्स करते हैं, और फिर उसको किसी ख़ास एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू, जैसे ट्रिप्सिन है या कोलेजिनेस है, उससे रिएक्ट करवाया जाता है ताकि वो टिश्यूज़ जो हैं वो उनको डाइजेस्ट करके आपको इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो सस्पेंशन में आ जाए. जब वो इंडिविजुअल सेल्स सस्पेंशन में आते हैं तो उनको कांटेक्ट के लिए, क्योंकि ये लाइव सेल्स होते हैं तो दे नीड कांटेक्ट, इनको कांटेक्ट की ज़रूरत होती है और ये इनकी डिपेंडेंसी होती है, यानी ये किसी सरफेस के ऊपर जाकर एंकर करेंगे तो ही ग्रो कर सकते हैं. तो इस वजह से इनको हम इन इस तरह के ख़ास फ्लास्क में, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें रखा जाता है. तो इसके बाद आप इन्हीं इसमें सस्पेंशन के साथ इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं. फिर जब ये माइटोसिस की स्टेज पर आते हैं और सेल दूसरे सेल के साथ जब कांटेक्ट में आता है, यानी टिश्यू बनाने वाली जो स्टेज आती है, उस वक्त इसकी जो है इनहिबिशन कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो इसको कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन. इस तरह से कांटेक्ट इनहिबिशन जब होती है तो ये देखें आप, इंडिविजुअल सेल्स इस तरह से आपको ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनको फिर जगह चाहिए होती है, वरना ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे और ओवर ग्रोथ हो जाएगी. इस वजह से हम इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो नए फ्लास्क में, फ्रेश मीडियम में पोर कर देते हैं. तो क्या होता है कि इनको भी जगह मिल जाएगी, और ये नई सेल्स जब इस वाली दूसरी प्लेट या फ्लास्क में आएंगी तो ये यहाँ पे फिर ग्रो करेंगे. तो यूजुअली इनका जो सेल की जो एंकरेज डिपेंडेंसी की वजह से आपके पास लाइफ स्पैन इसकी जो है कम हो जाती है. यानी प्राइमरी सेल कल्चर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी हद से हद लाइफ स्पैन अबाउट अ मंथ है. उसके बाद आपको फिर दोबारा से वो प्राइमरी सेल कल्चर बनाना पड़ता है. इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इमॉर्टल सेल लाइंस, या जिनको हम कंटिन्यूस सेल लाइंस हैं, वो यूज़ की जाती हैं. ये जो हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, यानी मॉडिफाइड हो जाते हैं जेनेटिकली, जैसे किसी ट्यूमर से एक्सट्रैक्ट आउट किए हुए हैं. ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स आप आइसोलेट कर लेते हैं ट्यूमर से, तो इनके अंदर ये होता है कि इनको एंकरेज की एबिलिटी इनकी लॉस्ट हो जाती है. इसके लिए आपको किसी ख़ास फ्लास्क में रखने की, या किसी जैसे हॉरिजॉन्टल फ्लास्क आपने पीछे देखा उसमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये सस्पेंशन में ग्रो कर सकते हैं.
तो इसीलिए इनको इमॉर्टल सेल लाइंस या कंटिन्यूस सेल लाइंस कहा जाता है। और इसमें स्मॉल ट्यूमर ग्रोथ्स की तरह आपको इस तरह से सेल्स मिल जाते हैं। तो इसमें आपको इसकी स्पैन भी, लाइफ स्पैन भी अच्छी खासी होती है और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। यहाँ तक होने के बाद आपके पास एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स एज अ होल, यानी पूरे एनिमल को आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स आर ऑफन यूज्ड इन वायरस research laboratories under certain circumstances. For example, for a given virus, both natural and non-natural hosts are used as experimental animals. For example, mice are often used as an experimental animal for infection of influenza virus, although mice are not the natural host for influenza virus. Moreover, experimental animals are very you can say indispensable for antiviral drug development and vaccine development. So, for example, cell culture experiment is inappropriate for studying infection pathology. Why? Because only one type of cell is cultured. By contrast, in animals, all kinds of cell types, including immune cells, are present in physiological circumstances. एनिमल्स जो हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में, ख़ास सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि वायरसेस के नेचुरल और नॉन नेचुरल होस्ट दोनों होते हैं। तो उस सूरत में आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो है एक्चुअली वो ह्यूमन होस्ट है उसका, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो हम माइस के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट सारे कर सकते हैं। वो नेचुरल होस्ट नहीं है इन्फ्लुएंजा वायरस के, लेकिन हम उसमें इंड्यूस करवा सकते हैं ताकि हम अच्छी तरह स्टडी कर सकें। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो हैं एंटीवायरल ड्रग डेवलपमेंट और वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हमें एनिमल स्टडीज़ करनी होती है तो फिर हम इन्हीं एनिमल्स के थ्रू जो है देख सकते हैं अपना रिजल्ट्स। और क्योंकि इस तरह की चीज़ों में जब आप वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहे हों या आप जो है स्टडी कर रहे हो किसी ख़ास वायरस को, तो आप सेल कल्चर पे इसलिए इनअप्रोप्रिएट है उसकी स्टडी की भी एक ही तरह के सेल्स एक्सट्रैक्ट आउट हुए होते हैं, तो वो आपको एज अ होल पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं देते। तो इसीलिए अगर हम पूरा एनिमल्स के अंदर वायरस को इंक्यूबेट करेंगे तो हमें हर तरह की सेल टाइप्स या हर तरह की सेल टिश्यूज़ उसमें हर तरह की टिश्यूज़ उसमें प्रॉपरली मौजूद होंगे, तो वो आपको एक बेहतर फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट देगा। इसके अलावा एनिमल मॉडल्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे सिर्फ ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरल होस्ट होते हैं पैथोजेनिक वायरसेस के। जैसे मैंने आपको इन्फ्लुएंजा का बताया, जैसे HIV जो का जो होस्ट है नेचुरल होस्ट ह्यूमन है। तो क्योंकि ह्यूमंस को हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें ऑल्टरनेटिव एनिमल मॉडल जो है तलाश करना होता है ताकि हमें मैनिफेस्टेशंस जो इन्फेक्शन की वो सारी नज़र आ सकें। ऐसी ऑल्टरनेटिव्स को, यानी जिनको ह्यूमन से हट के हम दूसरे एनिमल्स को यूज़ करते हैं, उनको हम एनिमल मॉडल्स कहते हैं। Animal models are not the natural host of human viruses, but they can be experimentally infected by human viruses, and they are very helpful for experimental analysis. In practice, the most widely used animal model is mice. It is the foremost choice. Why? Because they are small, they are affordable, and they are very well genetically well characterized. Although mice, as I have told you earlier, they are not natural host of influenza virus, but we can experimentally infect them and we can study them. And on the other hand, for some viruses such as HIV, primates are the only choice. Primates means chimpanzees are the only choice. Why? Because they are the only animal permissive of HIV infections. So एनिमल मॉडल्स के लिए भी यही आपको बताया मैंने कि इनमें हम नेचुरल होस्ट जो होते हैं कुछ, जिनमें सिर्फ ह्यूमंस ही हों, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस। अब माइस उसका नेचुरल होस्ट नहीं है, लेकिन हम उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस को
इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उसके बाद उसको हम स्टडी कर सकते हैं फॉर वैक्सीन पर्पज़ और फॉर रिसर्च स्टडीज़ एक्सेट्रा। जैसे HIV की अगर हम बात करें तो HIV में हमारे पास जो नेक्स्ट चॉइस, जाहिर सी बात है आप इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। सो आप उस सूरत में हमें सिर्फ प्राइमेट्स मिलते हैं और प्राइमेट्स में हमारे पास चिंपैंजीज़ हैं, उनके अंदर आप जो है HIV इन्फेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी हैव